Okay, we are live. Hello, good afternoon, and welcome back to the Law Entrance YouTube channel, everyone, and to another session of the Hindu analysis. Today is Tuesday, the date is 11th of March, and we are live with another session on the Hindu analysis. If you guys are able to hear me, see me, then please let me know in the chat box if I'm audible, if I'm visible. Please let me know so that we can start. Ashnur is here. Good afternoon. Ashnur, I remember that I have to respond to your message. I wasn't feeling well yesterday, so मैं कल देख नहीं पाया, but I will try कि मैं आज उसको message को respond कर दूँ. So that is an update for you. बाकी how's everyone doing? कौन आ गया stream पे? Brainwave is here. SP is here. Good afternoon. Very good afternoon. Brainwave is saying how are you? I'm good. थोड़ा सा health उतनी बढ़िया नहीं है, but ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है. चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस. लेट मी जस्ट गेट द पीपीटी फॉर यू गाइस. ओके, ऑलराइट. ब्रैम इज हियर. गुड आफ्टरनून. चलो ठीक है. आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल. अच्छा, आप लोगों के लिए मेरे पास एक नई अनाउंसमेंट भी है. सो टुडे there's a surprise plan for you guys at 4:30 p.m. on the YT channel. We at CLST are bringing something exciting for you all, something which would really help with your preparation. मैं ज़्यादा spoiler नहीं देना चाहता, but a new face is also coming on the YT channel, so you'll have one more person guiding you, mentoring you. So 4:30 p.m. पे आप लोग join करो. I'll be there. I'll be introducing the new faculty to you guys, and then you would be told what is the surprise. ठीक है? So काफी exciting है. I am hoping that maximum of you turn up at 4:30 p.m. today. Please don't forget the time. हमारी क्लास खत्म होने के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, 15-20 मिनट्स, आधे घंटे का, and 4:30 p.m. पे please come back to the channel so that we can tell you what's cooking up for you guys. ठीक है? And I promise this is going to be really helpful for you all in terms of your preparation. ठीक है? चलो आज का एजेंडा देख लेते हैं हम. The first topic is regarding India, US and WTO. This is an editorial article, quite straightforward. We'll discuss this. Then there is an article on food regulations and obesity. This discusses some FSSAI guidelines and how we need to have more stricter laws and regulation in terms of food security, not just food security, but food awareness, so that we can control the problem of obesity. Recently, हम एक article में discuss कर रहे थे कि 1 in every 4 adults in India are suffering from obesity and also from diabetes. Like these are not like and wala cheese, but 1 in 4 adults obesity, and another data says 1 in 4 adults suffering from diabetes. मतलब साथ में नहीं है, but अलग-अलग. ठीक है? So we'll see what this article is talking about. Then there's an article on census. Now, census is an exercise which is done every 10 years to understand the demographic growth, the social growth, the economic growth of the country. Last year exercise किस साल में हुई थी? When was the last census which was conducted? Can you guys tell me the year in the chat box? So this census exercise happens every 10 years. So this is a decennial exercise which is conducted by the government, and Constitution के कौन से article में mention है that every 10 years we would have the census? Can anyone tell me the article under which it is mentioned that census has to be conducted every 10 years? दोनों बातें मुझे chat box में जल्दी से बताओ आप लोग. 2011 is the correct answer for the previous census. Absolutely right. And article आया census पे because the parliamentary committee has instructed the government to conduct the census as soon as possible. Ashnur says article 246. Any other guesses? Anyone else who would like to guess कि census किस article में mentioned है? Like ये बात कि census हर 10 साल में होना चाहिए, ये किस article में mentioned है? Then we have another news. There is a new Canadian PM who is going to replace the current Prime Minister Justin Trudeau. Can you guys tell me the name of the newly appointed Canadian PM who has won with a huge majority of 85.9%? So that is the number of votes which that person has won, and he would be replacing Justin Trudeau of the Liberal Party.
Then there is another article which is a report by CIPRI. CIPRI is an organization based in Sweden, and ये लोग रिसर्च करते हैं अबाउट डिसआर्मोमेंट, कितना आर्म्स का ट्रेड हो रहा है, कितना वेपन्स का ट्रेड हो रहा है. एंड इसकी एक रिपोर्ट आई है विच सेज दैट इंडिया हैज नाउ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स आफ्टर which country? Which country is the largest importer of arms as of now in the past few years? Can you guys guess the name of the country? Largest importer of arms. यानी कि सबसे ज्यादा दूसरे देशों से उन्होंने वेपन्स और आर्म्स खरीदे. Mark Carney is the correct answer in terms of the new PM of Canada. Absolutely correct. Mark Carney. Carney कह लो या Carney कह लो, जो भी. Ukraine is the correct answer. Ukraine was the largest importer of arms because Russia Ukraine का war चल रहा है, लगभग 4 साल हो गए हैं war को चलते हुए, and Ukraine is the correct answer. So coming back to that question कि किस article में mention है census every 10 years करा जाएगा, that was a trick question. किसी article में mention नहीं है कि census हर 10 साल कराया जाएगा. Constitution has no mention of the time duration कि कितने interval पे census होना चाहिए. The Constitution just mentions कि census होना चाहिए. So census is a constitutional thing, but the time duration is not mentioned explicitly. The 10 years thing which we follow is more of a custom. कि ट्रेडिशन चला है हर 10 साल में करने का, तो हर 10 साल में हम लोग कर रहे हैं. ठीक है. 2021 में नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, एंड अब जो है बहुत जल्द होने वाला है. सो दैट इज दैट. दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑफ द न्यूज़पेपर फॉर टुडे. चलो न्यूज़पेपर पे चलते हैं. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर द डे. लेट मी जस्ट प्रेजेंट इट फॉर यू गाइस. Okay, so that is the newspaper for the day, 11th of March, Tuesday. Headline news: Union Minister DMK MP spar in Lok Sabha. This is again the whole, that controversy regarding the education policy. उसी पे ये debate चल रही है. Then talks yield no result. Highway remain blocked in Manipur. Mark Carney set to replace Trudeau as PM of Canada. So he's also from the Liberal Party, and he is going to succeed Justin Trudeau as the new Prime Minister. He has won 85.9% of the votes, and he said that the recent tariffs which have been imposed by US on Canada would be reciprocated by Canada till US does not back down, and they would not let US attack or pressurize Canada into doing anything. Talking about the background of Mark Carney, he has been the head of the Central Bank of Canada as well. Bank of Canada के head रह चुके हैं ये in 2013, and he was also the first non-citizen to run the Bank of England since it was founded in 1694. So Bank of England के head भी ये रह चुके हैं and became the first non-British to become the head of the Bank of England. And his appointment won bipartisan praise in the UK after Canada recovered from the 2008 financial crisis faster than many other countries. So he had a major role in averting the 2008 financial crisis के after effects for Canada. ठीक है, इतना ही है, इसमें और ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं. चलो, let's see what else do we have. Lalit Modi's Vanuatu passport to be cancelled. What is Vanuatu? Vanuatu is a country in the Pacific Islands. It's somewhere near Australia and New Zealand, somewhere in the middle of Australia and New Zealand. And this is a country which provides you a passport or a citizenship based on investment. So there are multiple countries which have a scheme where you can become a citizen of that country by investing a certain amount in that particular country. So for this particular country, Vanuatu, you can get the passport of this country by spending $1.5 million, if I'm not wrong. Yeah, $1.5 million, which somewhere comes around to be 2 crores, right? So उन्होंने ये पासपोर्ट खरीद लिया था, एंड अब बिकॉज ललित मोदी इज अ फ्यूजिटिव बिलियनियर, ही इज वांटेड फॉर सेवरल क्राइम्स इन इंडिया, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, on the request of the Indian government, that passport of his has been cancelled. So here it is written: I have instructed the Citizenship Commission to immediately begin proceedings to cancel Mr. Modi's Vanuatu passport. And yeah, that's pretty much it. Okay. Prime Minister of the Pacific Island nation of Vanuatu, Jotham Napat, on Monday ordered the cancellation of his passport. ठीक है.
All right, let's move ahead. Sharjeel Imam, one of the kingpins inciting violence during 2019 anti-CAA stir, says the quote. So, kingpin means the head, the chief orchestrator of everything. So, this is the person, Sharjeel Imam, and the court has said that he had a major role in inciting violence, inciting as in provoking people to commit violence. Okay. Man shot dead in East Delhi, tussle over city's crime rate. So this happened day before yesterday. A man was shot. Not day before yesterday, yesterday itself. In Ghazipur area. But yeah, this is not important for us. Jam lag gaya tha bahut zyada because of protest happening. Aiming to ensure 95% of new vehicles by 2027 are EVs, says Minister Pankaj Kumar Singh. Okay, city-based news is not important for us. We can move to state-based news. 7 lakh crore Maharashtra budget balances, fiscal prudence, job creation. Okay, ठीक है. Nothing important here. Nothing important here. Nothing important here. This rescue operation is going on in Telangana. Mm, Okay. So this is all crime-based and politics-based news, which is not relevant for us. We're down to the editorial section. The Indian University and the search for a VC. We have already discussed this, the new UGC regulations. So you can have a quick read of this article. This is not important from a competitive POV, but आप लोग पढ़ सकते हो ये article. The gist is UGC's draft regulations reflect the view that there needs to be a reinvention of university governance, an idea that the larger university community must support. मैं आपको एक बहुत ही brief gist दे देता हूँ कि ये नए UGC regulations क्या कहते हैं. These new UGC regulations open up the scope for the appointment of the vice chancellor from fields which are non-academic. यानी कि for example, if there's a university which is a business school, let's say they provide the MBA course. For that university, usually what the thing happens is कि for the appointment of a VC, it would be someone from an academic background जिसने बहुत ज़्यादा study कर रखी है उस subject पे, PhD कर रखी है, a lot of experience, a professor or a retired professor. Those are the people which usually become vice chancellors. And अब जो नए यूजीसी regulations हैं, they say that a person who is from a non-academic field but has relevant industry experience can also become a vice chancellor. So, for example, businessman, business tycoon, let's say Gautam Adani, or let's say Mukesh Ambani, or let's say Ratan Tata ji, late Ratan Tata ji. तो ये लोग भी VC बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज के based on the criteria which the university has. So वही यहाँ पे चीजें डिस्कस करिए कि there is now going to be a lesser role for the state executive. What are the options to consider? The outlook must change. Post tertiary education, highly cited and indexed publications, a notable articulation of visionary insights, high communication skills, ability to network. ये सारे criteria हैं कि these are the norms that are looked into for search of VCs. Various men and women of eminence have graced high academic office, etc., etc. Excellence and eminence are not restricted to academic departments and colleges anymore, which is what I was telling you. Restricting the field of choosing VC to teaching or research profession alone would not be appropriate in context of a rapid change in the Indian university scene. Pulling down stereotyped shibboleths and rebuilding with considerable reimagination call for original thinking, critical analysis, advocacy, networking, team working skills. So that is pretty much the whole issue. मैंने आपको gist बता दिया, बाकी आप article पढ़ सकते हो. On the left hand side, you have Union government finally attempts change in Manipur but faces hurdles. This is something which we have already discussed, the whole Manipur crisis, Manipur issue, and how there is still a deadlock. Limited overs form, India's performance in shorter formats of cricket is outstanding. This is in context of the recent Champions Trophy, which India has won, defeating New Zealand in the final. And India-US trade agreement in the test of WTO laws. What is WTO? WTO is the World Trade Organization. Can anyone tell me where is the headquarter of WTO? जल्दी से मुझे chat box में बताओ. Where is WTO headquartered? So WTO is a set of regulations. It's a body जहाँ पे international trade is regulated. The rules and norms, all of these are discussed. This was replaced by a previous legislation which was called the GATT, which was General Agreement on Tariffs and Trades. So उसके बाद आया ये आपका World Trade Organization, and इन्होंने काफी सारे laws बनाए to regulate trade between different countries.
एंड उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, जैसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन कंट्रीज, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन, आपको शायद अगर याद हो पिछले साल हमने डिस्कस किया था ये, कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग इंडिया के पास अब नहीं है यूएस से, एंड उस वजह से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप मोस्ट फेवर्ड नेशन होते हो तो आपको कम टैरिफ देने पड़ते हैं रेसिप्रोकल, एंड ट्रेड में फायदा होता है। इंटरिम एग्रीमेंट्स की बात करें इन्होंने, एनेबलिंग क्लॉजेस की बात करी है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है इन क्लॉजेस के, बट विल डिस्कस द जिस्ट ऑफ इट व्हेन वी कम बैक टू द एनालिसिस पार्ट ऑफ इट। दे टॉक अबाउट हाउ वी नीड टू रिस्पेक्ट WTO laws, especially US, and how Donald Trump's problematic conception of reciprocal tariffs, whereby US will increase tariffs rate to align with the tariff which other nations impose, violates the core principles of WTO of most favored nation and special and differential treatment, which allows developing countries to offer less than full reciprocity in their tariff commitment towards developed countries. Reciprocal tariff would also violate US bound tariff rate obligation, a promise not to impose tariff rates above what is committed at the WTO. So वहाँ पे आपको एक कमिटमेंट देनी होती है कि हम इतना टैरिफ लगाएंगे, उससे ज़्यादा लगाते हो तो that would be a violation. And nations such as India, which champion a rule-based trading order, need to actively push back against the dilution of these principles. So this is all in context with the recent trade tariffs which the US has imposed on various countries, especially India, Canada, China, Mexico. ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। फ्लॉड फूड रेगुलेशंस फ्यूल द ओबेसिटी क्राइसिस। सो ओबेसिटी पे हम रिसेंटली भी एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक 2-3 दिन पहले, लास्ट वीक, वेयर वी फाउंड आउट दैट 1 in every 4 adults आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, एंड मल्टीपल अदर रिपोर्ट्स की क्या क्या डाइट्स में कमी है, एंड हाउ वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ फास्ट फूड, अ लॉट ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, एंड फूड विच इज हाई इन शुगर एंड सॉल्ट कंटेंट. So this article is also on similar lines and says that जो economic survey का data है, उस डेटा के रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमें हेल्थ टैक्स लगा देना चाहिए। हेल्थ टैक्स का मतलब क्या है? मतलब जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको महंगा कर देना चाहिए ताकि उनका कंजम्पशन कम हो जाए। इकोनॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को सिन गुड्स कहते हैं। आप लोगों काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी शायद, कि अगर किसी चीज़ को आपको लाइक कम एक्सेसिबल करना है या उसका यूजेज कम करवाना है तो उस पर टैक्सेशन बढ़ा दो, उसका प्राइस बढ़ा दो। जैसे अल्कोहल हो गया, जैसे स्मोकिंग सब्सटेंसेस, टोबैको एंड ऑल हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट है कि वी नीड टू वर्क ऑन दैट, एंड देन दे टॉक अबाउट FSSAI एंड उसका क्या रोल होना चाहिए। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था थ्रू द FSSAI एक्ट ऑफ 2006, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2006 का रेगुलेशन है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा भी होना चाहिए, ये तो नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है। बट द पॉइंट इज कि सितंबर 2022 में FSSAI ने एक प्रपोजल दिया था कि हेल्थ स्टार रेटिंग होनी चाहिए। जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे स्टार रेटिंग होती है ना, कि कौन सा अप्लायंस कितना एनर्जी एफिशिएंट है, वैसे ही एक हेल्थ स्टार रेटिंग भी होनी चाहिए, कि जिससे पता चले कौन सा फूड ज़्यादा हेल्दी है, कौन सा फूड कम हेल्दी है। सो हाफ अ स्टार मीन्स द फूड इज लीस्ट हेल्दी एंड 5 स्टार मीन्स दैट इट क्वालिफाइड एज द हेल्दीएस्ट फूड। नाउ RTI रिस्पॉन्स आया कि FSSAI ने IIM अहमदाबाद की एक स्टडी यूज करी थी इस रेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, एंड दिस होल प्रोसेस साइडेड विद द इंडस्ट्री एज अ मेंबर ऑफ द स्टेक होल्डर ग्रुप पॉइंटेड आउट। FSSAI ने इग्नोर कर दी अपने ही ड्राफ्ट रेगुलेशन इंडिकेटिंग ट्रैफिक लाइट कलर कोडेड एंड मैंडेटरी वार्निंग लेबल्स, एंड इंस्टेड बाउड डाउन टू इंडस्ट्री लॉबिंग। अब इंडस्ट्री लॉबिंग यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी इंडस्ट्री, अगर कोई मान लो चिप्स बना रहा है या लेट्स से हाई शुगर वाले बिस्किट्स बना रहा है, तो क्या वो कंपनी, क्या वो लॉबीज, क्या वो कॉर्पोरेशंस चाहेंगे कि आप ये क्या कहते हैं, स्टार रेटिंग दे दो या फिर लेबल्स लगा दो या फिर ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर दो? नहीं, बिकॉज दैट वुड मेक द पीपल मोर अवेयर। देयर इज आल्सो एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, I don't know if you guys know him or not, called Food Farmer, who does exactly this. He teaches people how to read labels. काफी sensation हुआ था कुछ टाइम पहले when he received a lot of legal notices from companies, from Cadbury and other companies as well, कि आप जो है ये सब बंद करो अपना। So the thing is कि this nutrition rating system, चलो इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे when we come back to our analysis part. Let's finish with the newspaper insights first. Income levels of salaried class have stagnated in recent years. So this article is primarily what the headline says, कि जो salaried लोग हैं उनकी income जो है
in the last few years, it has not grown in real terms. By real terms, we mean when it is adjusted against inflation. इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है, 5-6% हर साल इन्फ्लेशन आ ही रहा है कंट्री में. रियल इन्फ्लेशन की अगर आप बात करो तो वो 8-9% भी कह सकते हो आप, क्योंकि बाकी जीएसटी वगैरह भी बढ़ रहा है, बाकी सारी चीज़ें भी बढ़ रही हैं, इनकम टैक्स भी है. So the thing is, real wages for salaried jobs were 1.7% lower in the June quarter in 2024 compared to the June 2019 quarter. So comparatively कम हो गई है, मतलब सैलरी इन रियल नंबर्स कम नहीं हो गए. ऐसा नहीं कि पहले 50,000 किसी को मिल रहे थे तो अब उनको 48,000 मिल रहे हैं, बट उनके 50,000 की वैल्यू, मतलब अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके अब 60,000 होनी चाहिए थी, तो वो सिर्फ 55 या 56,000 ही हुआ है. उस तरीके से कंपैरिजन है ये. एंड ऑन द फ्लिप साइड, surprisingly, the wages for casual labor or unskilled labor, that has still shown some good positive growth in terms of beating inflation or in terms of real income. So that is what this article talks about, and they have supported with various numbers and graphs. आप लोग इसको पढ़ सकते हो. ठीक है. Does Tamil Nadu offer engineering courses in Tamil? Asks our Home Minister Amit Shah. So this is regarding. This is not a meeting. This is more of a political rally type of CISF day पे जो था, and इन्होंने पूछा कि जो है तमिलनाडु मेडिकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग एजुकेशन तमिल में क्यों नहीं ऑफर कर रहा. Now this is in context with the recent protest by Tamil Nadu authorities and Tamil Nadu की government, which said that जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही क्यों कंडक्ट करवाए जाते हैं. जैसे सीआरपीएफ के एंट्रेंस एग्जाम्स का इन्होंने इशू उठाया था. तमिलनाडु के जो सीएम है एमके स्टालिन, उन्होंने कहा था सीआरपीएफ जो कि विच इज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, विच इज फोर्स विच वर्क्स टुवर्ड्स मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फॉर इंडिया इन अपार्ट फ्रॉम द पुलिस फोर्स. तो उसमें जो भर्ती के एग्जाम होते हैं, जो एंट्री के एग्जाम होते हैं, उसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज जस्ट हिंदी एंड इंग्लिश एज ऑफ नाउ. तो उन्होंने कहा था कि ये डिसीजन गलत है एंड रीजनल लैंग्वेजेस में भी होना चाहिए. सो लेट्स रीड द जिस्ट ऑफ दिस. 2010 में करुणानिधि गवर्नमेंट had mooted the idea of offering engineering courses in Tamil as the medium of instruction. फिर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा participating in convocation of this medical university batted for teaching medical and allied health courses including nursing in Tamil medium. फिर स्टालिन जी ने कहा कि हिंदी और इंग्लिश में ही सिर्फ क्यों होता है रिक्रूटमेंट एग्जाम. एंड अभी हमारे अमित शाह जी ने भी कहा कि आई हैव बीन आस्किंग फॉर दिस फॉर द लास्ट 2 years बट टू नो अवेल. आई होप today he will certainly do something. So he is pointing out to the chief minister MK Stalin to provide these courses in Tamil as well. That is what the whole controversy is. What is behind the rise of quick commerce? Quick commerce essentially means your companies like Blinkit and Zepto, which provide home deliveries of various things in less than 30 minutes, usually 10-15 minutes. सो उसका पूरा उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया कि हाउ डज इट वर्क. एंड उसके लिए डार्क स्टोर्स होते हैं. डार्क स्टोर्स आर एसेंशियली लार्ज गोडाउन्स विच आर क्लोज टू रेसिडेंशियल सोसाइटीज एंड लोकेलिटीज. एंड वहाँ पे ये सारे सामान ये लोग रखते हैं, वहाँ पे राइडर्स रहते हैं. And it entails rapid delivery, typically in 10 to 20 minutes, of products to customers' doorstep. This is facilitated by an elaborate network of dark stores or distribution centers. And currently ये मार्केट $3.34 billion की है. तो 2029 तक ट्रिपल हो जाएगी, $9.95 billion हो जाएगी. ठीक है. बाकी ये लोग कह रहे हैं कि in recent complaint to Competition Commission of India accused the trio of Blinkit, Zepto and Swiggy Instamart of anti-competitive practices. Now this is obviously going to affect the business of the offline kirana stores or the grocery stores, क्योंकि people are now preferring convenience and comfort over getting out and buying their groceries. And क्योंकि इतने ज़्यादा discounts भी मिल रहे हैं इन platforms पे, that is why they are being accused of creating an anti-competitive situation in the market, जहाँ पे it is becoming difficult for others to sustain. So इसको ये लोग कह रहे हैं unfair trade practice है ये. देखते हैं. So next we have the warp and weft of existentialism and Swadharma. This is not important for us. New Delhi considers restoring High Commissioner to Canada to reset ties. तो जो नए कैनेडियन पीएम आए हैं वो कह रहे हैं कि अब हमें इंडिया के साथ अपने बायलैटरल रिलेशनशिप रिस्टोर करने हैं आफ्टर द होल कंट्रोवर्सी विच हैपेंड, जिसकी वजह से
इंडिया कनाडा में थोड़ा सा डिप्लोमेटिक इश्यूज आ गए थे आफ्टर द होल killing of that person called Niger, and then Canadian government accusing Indian government accusing Canadian government, and दोनों फिर नाराज हो गए एक दूसरे से और एक दूसरे के हाई कमीशन बंद कर दिए थे। अब जो है हो सकता है चीजें रिस्टोर हो जाए। 13 held as group clash in Mau to mark India's cricket win. Okay. Calcutta High Court Judge Joy Malia Bagchi elevated to the top court. So this is a one-liner which you can note down that Calcutta High Court के ये judge हैं Justice Joy Malia Bagchi. He has now become a judge of the Supreme Court, and इनका जो टेन्योर रहेगा 2031 तक रहेगा। 2031 में थोड़े टाइम के लिए ये चीफ जस्टिस भी बनेंगे मई 2031 के आसपास, and he has now been elevated to the High Court, and 2013 के बाद he is the first judge from the Calcutta High Court to come to the Supreme Court after Justice Altamas Kabir, who was the previous judge from the Calcutta High Court, who joined the Supreme Court. So he would become the Chief Justice of India in May 2031 and continue till his retirement in October 2031. ठीक है, तो इसमें बस यही वन लाइनर है। Then what else can we have? Parliamentary panel asks government to conduct census at the earliest. So parliamentary standing committee जो है होम अफेयर्स की, उन्होंने को एक कहा है गवर्नमेंट को कि सेंसस जल्दी से जल्दी कराया जाए, and to prepare data on the influx of immigrants including Bangladeshis, Rohingyas and people from Myanmar and other countries. Rohingyas are entering and settling illegally in various parts of the country, said the committee. Home Affairs should take effective steps to identify the illegally settled Rohingyas and repatriate them to their parent countries. Repatriate मतलब वापस भेजना. Then they are saying that they should be using these Aadhaar digital databases to make this data even more efficient. एंड इसकी थोड़ी सी और हम बात करेंगे सेंसस की, क्या इसका बैकग्राउंड है, कब स्टार्ट हुआ, कैसे होता है। Rahul demands discussion on voter list in parliament. Opposition MPs walk out in Rajya Sabha. So this is whole related to the delimitation wala debate and discussion. The delimitation के against हैं opposition parties and especially the southern parties, southern states, and they were protesting in the Rajya Sabha. Okay, then what do we have? India's second largest arms importer after Ukraine in 2020-24, says SIPRI. So this we'll discuss in detail. What is this all about? Bomb hoax makes Air India flight return to Mumbai. Over 6 lakh cases identified as part of TB control campaign. So recently अभी हमने 100-day intensified TB elimination campaign चलाया था, दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, एंड अब इसके रिजल्ट्स आ गए हैं। 6.1 lakh TB patients have been notified. 4.3 lakh have been diagnosed in 455 different districts. So 100-day TB मुक्त अभियान was this new strategy, and इंडिया का गोल है कि इंडिया को टीबी फ्री बनाना है by this particular year. जो WHO का गोल है for the entire world that is 2030, but जो इंडिया का गोल है that is 2025, which is this year. Fashion brand apologizes for holding show in Gulmarg. Okay. Okay, nothing new here. Same old stuff. ठीक है. I think that's pretty much all about today's newspaper. Let's come back and discuss our articles. The 2, 3, 4 articles which we have identified. So सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। इंडियन आर्म्स इंपोर्ट से नीचे से स्टार्ट करते हैं आज। So ये जो रिपोर्ट है, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सिप्री। कोई मुझे बता सकता है सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मैंने अभी आपको बताया था कौन सी कंट्री की ये ऑर्गेनाइजेशन है। कैन यू गाइस गेस वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिप्री? SIPRI, सिप्री, विच इज, फुल फॉर्म बताऊंगा मैं तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा सिप्री के फुल फॉर्म से। Does anyone know the answer? Yes, WTO का आंसर आपने बिल्कुल सही दिया। Geneva, Switzerland is the correct answer. Where is the headquarter of SIPRI?
स्वीडन तो मैंने बताया ही था, मैं सिटी पूछ रहा हूँ, बट ठीक है चलो। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम एंड वहीं सिप्री का हेडक्वार्टर भी है, एंड इसकी फुल फॉर्म भी यही है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड एक सेकेंड, स्लाइड नहीं चेंज करी क्या मैंने? हाँ, so now India has become the second largest arm importer after Ukraine in 2020 and 24, and इस जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में काफी सारे नंबर्स एंड स्टैट्स दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ किसने कितना कहाँ से इंपोर्ट किया। इंडिया ने सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहाँ से किया? कैन यू गाइस टेल मी? यूक्रेन था सबसे बड़ा इंपोर्टर, जिसको काफी सारी कंट्रीज ने, 30 से ज्यादा कंट्रीज ने बहुत सारे सप्लाईज दिए इन टर्म्स ऑफ वेपन्स। उनका वेपन इंपोर्ट 100 टाइम्स से इंक्रीज हो गया व्हेन यू कंपेयर द प्री वॉर नंबर्स एंड द पोस्ट वॉर नंबर्स, 2020 से 24 तक के नंबर्स। सेकंड नंबर पे इंडिया आया। इंडिया के नंबर्स ऑल्दो थोड़े से ड्रॉप हुए हैं 2015 से 2019 के कंपैरिजन में, बट स्टिल सेकंड नंबर पे इंडिया चल रहा है। एंड इंडिया ने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया रशिया से, उसके बाद सेकंड नंबर पे आया फ्रांस। सो फ्रांस एंड रशिया वर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स टू इंडिया, एंड ऑल्दो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, बट स्टिल दे आर ऑन द टॉप। नाउ एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट विच इज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल इज, चाइना जो है टॉप 10 आर्म्स इंपोर्टर की लिस्ट से पहली बार बाहर हो गया सिंस द 90s से। हमेशा चाइना इंपोर्टर्स की लिस्ट में रहा करता था, बट दिस टाइम चाइना इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 आर्म इंपोर्टर्स, इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज। इससे पता चलता है कि चाइना जो है अपने वेपन्स, अपना इक्विपमेंट खुद से बनाने लग गया है। उनका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि दे आर नाउ नॉट इंपोर्टिंग दैट मच विच दे यूज्ड टू। सो फर्स्ट पे है यूक्रेन, सेकंड पे है इंडिया, थर्ड पे है एज यू कैन सी कतर, फोर्थ इज सऊदी अरेबिया एंड फिफ्थ इज पाकिस्तान। सो टॉप 10 में काफी सारी इंडियन कंट्रीज हैं, एशिया की काफी सारी कंट्रीज हैं। फोर कंट्रीज इन द टॉप 10 आर फ्रॉम एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया ओशियनिया भी काउंट कर लो, अगर एशिया में तो नहीं आता ऑस्ट्रेलिया, बट हाँ, दीज आर फोर फ्रॉम द एशियन एंड द ओशियानिक रीजन। एंड इंडिया के मैक्सिमम आर्म्स जो है रशिया से आए, 36% हमने रशिया से इंपोर्ट किया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे फ्रांस आया। पाकिस्तान के इंपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। एंड चाइना जो है ऑब्वियसली इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स टू पाकिस्तान। पहले जो है लगभग 61% पाकिस्तान के आर्म्स चाइना देता था, सॉरी 74% पहले चाइना देता था, अब वो नंबर 81% हो गया है। एंड रशिया की अगर आप बात करो तो रशिया ने अपने आर्म्स मैक्सिमम इंडिया को दिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना को दिए, थर्ड नंबर पे कजाकिस्तान को दिए। तो इसमें ऐसे ही बहुत सारे काफी सारे इनसाइट्स हैं इन टर्म्स ऑफ किसने किसको कितने वेपन दिए, किसने ज्यादा खरीदे, किसने कम खरीदे। एंड दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज प्रीटी मच अबाउट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सिपरी, ये हर साल अपनी ये रिपोर्ट कंपाइल करता है, एंड फिर पीरियड ऑन पीरियड ये लोग कंपैरिजन करते हैं कि कितना बढ़ गया, कितना कम हो गया। एंड मेनली तो आपको इंडिया का ही बस पता होना चाहिए कि इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। सो दिस सिप्री विच इज द स्टॉकहोम रिसर्च पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर इज इन अ सिटी कॉल्ड सोलना, which is again in Sweden. Sweden is a Nordic country, Europe की fifth largest country and the largest Nordic country. Capital is Stockholm and the headquarter of SIPRI is in Solna, Sweden. तो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए काफ़ी है, इसमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, मार्क कैर्नी टू रिप्लेस ट्रूडो एज पीएम ऑफ कनाडा, इसमें और कुछ नहीं है डिस्कशन। इज फ्रॉम द लिबरल पार्टी, 185.9% वोट्स, गोइंग टू रिप्लेस जस्टिन ट्रूडो, दैट्स प्रीटी मच इट। एंड ही हैज बीन द हेड ऑफ द बैंक ऑफ कनाडा एंड आल्सो द बैंक ऑफ इंग्लैंड, द ओनली नॉन सिटीजन सिंस 1694 टू बी द हेड ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट एंड द टेस्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ लॉज की। ऑल्दो हमने मोर और लेस डिस्कस कर ही लिया इसमें, जो भी था कि जो डब्ल्यूटीओ के लॉज हैं उनको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, स्पेशली यूएस को, एंड हाउ इंटरनेशनल ट्रेड इज बीइंग अफेक्टेड नाउ दैट यूएस इज वायलेटिंग दीज कमिटमेंट्स। एक सेकंड, ये क्या हो गया? वायलेटिंग दीज कमिटमेंट्स टू द डब्ल्यूटीओ। इंडिया भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, इनिशियल स्टार्टिंग से ही इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर है। एंड डब्ल्यूटीओ के कितने मेंबर्स हैं? लगभग 164 मेंबर्स हैं। एंड ये लोग टैरिफ्स डिसाइड करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के आपस में क्या टैरिफ्स रहेंगे। एंड दिस सिस्टम ऑपरेट्स ऑन द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, जिसमें
जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स. सो यू कैन सेट कि आपको किस नेशन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग देना है, किसके साथ आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, एंड यू कांट वायलेट दीज कमिटमेंट्स जो कि आपने डब्ल्यूटीओ के साथ कर दिए. डब्ल्यूटीओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 एंड 164 मैंने आपको बता दिया इसके मेंबर्स हैं. फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है. दिस वाज रिप्लेस्ड बाय द गैट व्हिच वाज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स. एंड गैट जो है फोर्स में रहा था 1948 से लेके 1994 तक. उसके बाद डब्ल्यूटीओ आ गया. एंड या दैट्स प्रीटी मच इट. मोस्टली तो उन्होंने यूएस के टैरिफ्स की ही बात करी है कि हाउ यूएस इज वायलेटिंग द टर्म्स ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया नीड्स टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स एंड कमिटमेंट्स व्हिच इट हैज मेड इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया. पार्लियामेंट्री पैनल आस्क्ड गवर्नमेंट टू कंडक्ट सेंसस एट द अर्लीस्ट. सो सेंसस का भी हमने मैक्सिमम डिस्कशन कर लिया कि सेंसस लास्ट टाइम हुआ था 2011 में. यूजुअली एवरी 10 इयर्स होता है. सबसे पहला सेंसस कब हुआ था इंडिया का? कैन एनीवन टेल मी व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, इन द कंट्री? सबसे पहली बार सेंसस कब हुआ हमारे देश में? ये किसको पता है? स्टैटिक जीके क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेंसस अब इतनी बड़ी न्यूज बन गई है, इतने सालों बाद हो रहा है, तो सेंसस से रिलेटेड आपको सारा कुछ पता होना चाहिए. दिस बिकम्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, द सेंसस इन इंडिया. सो व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो है इसको करवाती है. 2021 में नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ द कोविड पेंडेमिक. ये आर्टिकल मेंशन करता है कि हाउ वी नीड टू लेवरेज आवर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन कनेक्शंस, आधार डेटाबेस, गवर्नमेंट के डिफरेंट हेल्थ वाले डेटाबेस. इन सारे डिजिटल चैनल्स को हम यूज कर सकते हैं सो दैट आवर डेटा इज मोर एक्यूरेट, डेटा इज मोर एफिशिएंट एंड मैनुअल क्रॉस चेकिंग भी हो सकती है डेटा की, जिससे जो है डिस्क्रिपेंसीज नहीं आएंगी. जो कि इतने सारे रेफ्यूजीज आ गए हैं इंडिया में, वो भी इजीली पता चल जाएंगे. सबसे पहला सेंसस इंडिया में हुआ था इन द ईयर 1881 एंड द सेंसस कमिश्नर वाज डब्ल्यू.सी. प्लाउडन. ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ. डब्ल्यू.सी. प्लाउडन वाज द फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड द सेंसस हैपेंड इन 1881. 1881 के बाद से हर 10 साल में सेंसस होता रहा है. सेंसस एक्ट 1948 में आया था, which was a proper regulation, legislation I would say, which came in the year 1948 and this is an activity which we conduct every 10 years. काफी सारे कंट्रीज जो हैं एवरी 5 years भी करवाते हैं इसको. जैसे जापान हर 5 साल में करवाता है, ऑस्ट्रेलिया हर 5 साल में करवाता है, लेकिन काफी सारे कंट्रीज इसको हर 10 साल करवाते हैं. जैसे यूएस कंडक्ट्स इट एवरी 10 years, यूके कंडक्ट्स इट एवरी 10 years एंड सिमिलरली इंडिया आल्सो कंडक्ट्स इट एवरी. ठीक आने वाली थी, आई ही नहीं. हाँ, तो ये बता रहा था मैं आपको कि दिस इज जस्ट टू रिव्यू द कंट्रीज प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो कैसी चल रही हैं, कितना उनका कवरेज है, डेमोग्राफिक डेटा क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है. फिर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसमें. स्टेट वाइज भी पैरामीटर्स होते हैं, जेंडर के पैरामीटर्स होते हैं, इनकम लेवल के पैरामीटर्स होते हैं. एंड यूजुअली जो सेंसस पहले जो कराता था दैट यूज्ड टू बी अ सेंसस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हर सेंसस के लिए अलग से अपॉइंट होती थी 1951 में. बट अब जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वही सेंसस करवाती है. द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर, ये सारा किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर. ठीक है. सो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर दो बॉडीज है. वन इज द सेंसस कमिश्नर और द सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया एंड द सेकंड इज द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल. तो ये दो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं व्हिच आर रिलेटेड टू द सेंसस व्हिच हैपेंस एवरी 10 years. एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ पे मेंशन है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंसस कहाँ पे मेंशन है? इट्स मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल. यूनियन लिस्ट के अंडर आता है. यूनियन लिस्ट मतलब सेंटर इस पे रूल्स बना सकती है एंड लॉज बना सकती है. एंड यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 69 में आता है. सो ये भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ. entry 69 of the 7th schedule, entry 69 of the union list and the 7th schedule of the Indian Constitution. So that is pretty much all you need to know about the census as of now. फिर जब census हो जाएगा तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. वैसे तो आप लोग का एग्जाम उससे पहले ही हो जाएगा आई थिंक, बट लेट्स सी. Then the last article is about flawed food regulation. ये भी हम more or less discuss कर चुके कि there has to be a food safety rating conducted by FSSAI. There has to be higher health tax on
foods which are ultra processed or high in fat, high in sugar, high in salt. And we need to control this crisis of obesity which India is suffering through. कि हर excuse me, हर चौथा इंसान जो है is suffering from obesity or diabetes. And काफ़ी सारे इसमें surveys mention है. They also talk about how different star ratings should operate. They're saying how a soft drink जैसे cold drink, coke वगैरह हो गई, उसको high warning मिलनी चाहिए sugar content में, and दो स्टार मिलने चाहिए. वैसे कॉर्नफ्लेक्स जो कि शुगर कह रहा हूँ, शुगर और सॉल्ट दोनों में हाई है, उसको 3 स्टार मिलने चाहिए. दिस इज हाउ वी कैन क्लासिफाई डिफरेंट फूड्स ऑन अ फ्रेमवर्क. काफ़ी सारी कंट्रीज में है भी ऐसा फ्रेमवर्क. ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी इस टाइप का फ्रेमवर्क ऑपरेट करता है, एंड देयर सेइंग कि इंडिया में भी इस टाइप का फ्रेमवर्क हमें स्टार रेटिंग वाला बनाना चाहिए एंड हेल्थ टैक्स वगैरह लगाना चाहिए, सो दैट वी कैन कंट्रोल द ओबेसिटी इन द कंट्री. And yeah, that's pretty much all about the newspaper analysis, guys. ये 4-5 आर्टिकल थे आज अच्छे. बाकी let's do the vocabulary for the day. Also, now that we have 10-15 people and some people have newly joined, मैं एक important announcement थी वो फिर से कर देता हूँ. Today at 4:30 PM, यानी कि आज हमारी क्लास खत्म होने के लगभग 40-50 मिनट बाद, we are coming live again to make a very major announcement for you guys. अब इस announcement में दो चीजें हैं. एक, there is a surprise offering for you guys, and this is obviously a free offering which would help your preparation, and there is a surprise faculty which we are going to announce. Primarily I am going to announce for you guys. So 4:30 पे जल्दी से आप लोग जुड़ जाना हमारे साथ, and we'll discuss what is going to happen. ठीक है, please turn up. All right. So the first word is gratuitous. Gratuitous मतलब होता है not needed by the circumstances or to accomplish an end, यानी कि फालतू हिंदी में बोले तो. Unnecessary, extra, needless, necessary, essential, required are antonyms. There's too much crime and gratuitous violence on TV, यानी कि बिना बात का वायलेंस. Haggard का मतलब होता है थका हुआ, परेशान, especially from fatigue, worry or suffering. So currently I am also feeling a little haggard. He looked pale and haggard, tired, drained, unwell. Antonyms are healthy and fit. The third word is voracious. Voracious मतलब होता है wanting or devouring great quantities, यानी कि बहुत सारी हड़प लेना. अब दिस कुड बी फूड, यूजुअली इट्स फॉर फूड, बट काफी बार रीडिंग के लिए भी यूज होता है. आप लोगों ने शायद सुना हो दैट ही इज अ वोरेशियस रीडर और आई एम अ वोरेशियस रीडर. उसका मतलब होता है आई रीड अ लॉट. सो बेसिकली दिस सिग्निफाइज ग्रेट क्वांटिटीज. वोरेशियस. इनसटाइबल यानी कि जिसकी भूख मिटती ही नहीं है. अनक्वेंचेबल, दिस इज फॉर थर्स्ट, जिसकी प्यास मिटती नहीं है. अनअपीजेबल यानी कि जो सेटिस्फाई ही नहीं होता है. एंटोनिम्स आर सैटिस्फाइड, फुल, ग्लटेड. It seemed like the voracious kitten was eating her weight in food every day. So these are the three words. First is voracious, second is haggard, which means tired, and the third is gratuitous, which means unnecessary. And that brings us to the end of today's discussion. I hope this was useful and helpful. I'll see you all today itself in a few minutes, 4:30 p.m. So make sure that you tune in to the YouTube channel live, and मिलते हैं थोड़ी देर में नए सरप्राइज के साथ. तब तक टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ.